So make sure that you start your Yeah. never start your day with sugary breakfast. Never do Yeah. that. At least one meal in a day. अगर आप इतने भी बिजी हो कि यार मेरे को सुबह 6 बजे Yeah. निकलना होता है, ये है वो है वगैरह वगैरह, one meal in a day minimum you must have together as a family. लेकिन एज ए पेरेंट आप टैंट्रम को Yeah. कैसे हैंडल कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट एक्सप्लेन टू देम Yeah. लेटर व्हेन दे आर लिटिल काम. तो जिद कर रहे होगा तब नहीं समझेगा. True. Thank you, Dr. Sayed, for joining us and sharing your knowledge about pediatric health. As all of you know, sir is widely popular on social media for the innovative ways जिससे वो बच्चों को डील करते हैं. And as a father, I had faced this challenge always. मतलब जब भी बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, it's always a challenge because after some point, the child also starts to recognize the clinic and the doctor, and he realizes कि भी यहाँ पे जाके क्या होने वाला है मेरे साथ, injections and medicines. And somehow उसको एक certain amount of objection create हो जाता है वहाँ जाने से. But मैंने सर के वीडियोस देखे हैं, the way he deals with children's, I mean, absolutely amazing, and that's how I became his fan, and I approached him to be on the podcast. And thank you very much for accepting the invite, sir. So, sir, I just want to understand, थैंक यू. matlab, what is it that you do differently as compared to, say, other routine doctors? And what is it? Is it like psychology? Is it distraction? आप कैसे कर पाते हैं वो चीज जो मतलब most of the others doctors cannot? What is the science behind it or the art? Well, there is no there is no science behind it. But see, the frankly speaking, I of course I've been practicing for the past close to about 14-15 years now. So मेरे पास Okay. जब पेरेंट्स आते थे पहले भी जो आना शुरू करते थे बच्चों को लेके, so it's to see that some kind of anxiety among parents, right? अगर बच्चे को फीवर भी है तो उनको स्ट्रेस होगा, जी. खांसी भी है तो स्ट्रेस होगा, वैक्सीनेशन डे के दिन में भी वो स्ट्रेसफुल रहते हैं कि हाँ अभी मेरा 6 महीने का बच्चा रोएगा, मेरा 1 साल वाला बेटी रोएगी, अभी गॉड इज गोइंग टू बी बैड डे, बैड नेक्स्ट कपल ऑफ डेज विल बी पेनफुल, ये सब वगैरह वगैरह. So I always believe in doing something different, or same thing doing differently is what I believe in, right? Now there are hundreds and thousands of Yeah. doctors across the country. They're all doing brilliant job in their own domain, in their own talent, in their own Yes. particular capability. Yeah. मेरा एक ये था कि मैं अलग करूं, कुछ अलग एक्सपीरियंस दूं लोगों को, बिकॉज वो आते थे वैक्सीन लेके जाते थे, बच्चे रोते थे. ऑफ कोर्स आई हैव बीन वेरी टॉकेटिव, वेरी फ्रेंडली विथ माय पेरेंट्स, द पेरेंट्स हु कम हियर विद द किड्स आल्सो पहले से. बट ये हम काफी साल से मैं ये शुरू किया था, ऑलमोस्ट मे बी अबाउट 8 years or 9 years ago, जब मैंने ये अपना एक स्टाइल शुरू किया, जहाँ पे मेरा टेक्निक है डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट एंड डिलीवर. I distract them, Okay. I divert them from the main thing, then I Yeah. deliver the shot. Yeah. So, see, Okay. इसमें एक मैसेज है मैं जो जनरली देता हूँ मेरे मेरे व्यूअर्स जी. को, मेरे फॉलोअर्स को, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे. सी, life will give you a lot of pains, right? Life is, if you look at one perspective, life will be full of pains. Pain of financial pains, emotional pains, family health issues, so on and so forth, right? Society problems, etc. So if you keep yourself distracted towards positive things, towards more progressive things, towards most things which are beneficial, things to be grateful for, things which are good for you, ये आपका दर्द लाइफ का भी कम हो जाएगा. जैसे आपने देखा होगा वीडियोस में, तो फर्स्ट पहले मैं आई कांटेक्ट कर लेता हूँ, बेबी को एंगेज कर देता हूँ, वो टारगेट लॉक कर देता हूँ पहले. Then I Yeah. do my best to become joker या monkey या कुछ भी बोलो. I just go to any level Yeah. to keep that distracted towards me. And उस distraction में Yeah. मैं secretly अपना weapon launch कर देता हूँ. Unfortunately or fortunately किसी भी medical school में सिखाया नहीं जाता है. It is not a formal education in medical school. True. कि आपको कैसे Yeah. बात करना चाहिए, कैसे पेरेंट्स से बात करना चाहिए, आपको कैसे आपको वो एक्स्ट्रा माइल एंड डू इट. ये हर एक का इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, हर एक अपने हिसाब से कर रहा है. तो दिस आई ऑलवेज फाइंड इट पैशनेट, एंड इट ऑलवेज गिव्स मी सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट. इफ इवन आई हैव मेड वन चाइल्ड, इफ आई प्रिवेंटेड पेन ऑफ वन चाइल्ड, अगर कोई बच्चा आया है, माँ स्ट्रेस में थी,
Yeah. हंसते हुए गए हैं या फिर थैंक यू बोल के गए हैं, so that gives me a great sense Yeah. of satisfaction. So ये एक है, इसमें कोई साइंस नहीं है, सिंपल डिस्ट्रैक्शन है. हाँ, मेहनत काफी लगती है इसमें, बिकॉज बिकॉज यू सी जी. तो लोग अक्सर कहते थे कि सर ऐसे वीडियोस तो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में फेमस हुए हैं, यू नो, कोई यूएस का Yeah. डॉक्टर है, कोई यूरोप का डॉक्टर है, ऐसे एक दो वीडियोस हमारे पास आए थे, वो भी काफी साल पहले आए थे, वी नॉट सी. बिकॉज इंडियन सिनेरियो में क्या होता है, यू गॉट मेनी पेशेंट्स वेटिंग, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इज लाइक देयर इज अ ह्यूज गैप, राइट? सो पेशेंट्स आर मेनी एंड True. उसके बावजूद यू Yeah. हैव टेक टाइम एंड 10-15 minutes with each patient playing and each child Yeah. distracting, and ज्यादा पेशेंस Yeah. चाहिए, एफर्ट चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए. सो इट कैन Yeah. ओनली हैपन अगर आपके पास वो पैशन है, अगर आप एंजॉय कर True. रहे हो Yeah. जॉब कर रहे हो. So for me जी. it is fun work. I just have fun in my cabin. Yeah. Fantastic. Fantastic. Absolutely. That is pretty much visible in your videos as well, because वो दिखता है, वो जो fun आप, the enjoyment that you are getting out of it, वो palpable है, मतलब anybody can see it कि you are in no hurry. I mean, I'm sure कि उस time पे बाहर दूसरे patients भी बैठे होंगे, they must be waiting, and you also know कि pipeline है, सारे patients को attend करना है. But उस क्लिप में वी कैन वेरी क्लियरली सी कि आपको कोई जल्दी नहीं है, मतलब एज लॉन्ग एज इट टेक्स फॉर दैट चाइल्ड टू बी हैप्पीली एडमिनिस्टर्ड दैट मेडिसिन, वो जो टाइम लगेगा वो लगेगा, यू आर सॉर्ट ऑफ प्लान्ड फॉर इट, एंड दैट पैशन एंड दैट हैप्पीनेस एंड दैट जॉय इज definitely visible. So sir, from your practice, like what are the issues that you see with these young kids that come to you? सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के आते हैं? हाँ, सी देखिए, मोस्ट कॉमन अभी फॉर एग्जांपल अभी विंटर शुरू हो चुके हैं पूरे इंडिया में, ठंड बढ़ रही है, राइट? एंड इनफैक्ट मॉनसून के एंड से ही वी स्टार्टेड लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी केसेस, जैसे कोल्ड, कॉफ, फीवर. 70 to 80% Yeah. ऑफ विजिट्स टू एनी will be for the respiratory conditions, right? जैसे सर्दी हो गई, बच्चे को Okay. खांसी हो गई, जी. है. So this is a particular infection which is most commonly encountered, and Yeah. one problem among this, that खांसी नहीं जा रही है is a question every mother, every जी. father हाँ. asks us. persistent cough Of जो the है वो, that is a problem. Yes. जी. cough has been one of the most challenging symptoms to treat. Cough, right? Because obviously a Yeah. coughing child, no one can see. Parents are not comfortable. वो देख नहीं सकते, बच्चा रात को खांसता है, सोता नहीं है, उल्टी कर देता है, वगैरह. So that is difficult for them to जी. see on a daily basis. It becomes very challenging for a doctor to give that kind of quick relief, because unfortunately खांसी का कोई quick relief नहीं है, because it's all airway. Okay. आपका throat, आपका lower airway है. Of course, different kinds of coughs are जी. there, throat cough, chest Yeah. cough, वगैरह वगैरह, post nasal cough. So हर एक का cough different हो सकता है, but ये इस सीजन में हम काफी ज्यादा देख रहे हैं, सर्दी, खांसी, बुखार. बट मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ, सी हर Okay. बुखार निमोनिया नहीं है, डेंगू नहीं है, हर बुखार टाइफॉइड जी. नहीं है, एंड हर खांसी जी. ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, हर खांसी नहीं है. सो डोंट पैनिक एंड जी. डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ, बिकॉज सीजनल पैटर्न में बच्चों को खांसी, सर्दी, बुखार होगा ही होगा, वेदर इट इज a 6 months बेबी और a Okay. 6-year-old चाइल्ड, राइट? बट आपको कुछ Yeah. चीजों का ध्यान True. रखना है. Yeah. ओवरऑल जी. बच्चे का एक्टिविटी कैसा है, इज अ चाइल्ड एक्टिव इन जनरल, मतलब खेलता है, कूदता Okay. है, Yeah. फिर भी खांसता है, फिर आता है, जाता है, लेकिन बीच में एक्टिव है. एंड उसका यूरिन आउटपुट कैसा है, हाइड्रेशन जो कहते हैं हम, हाउ मच यूरिन, Okay. लेट्स से 5-year-old passing at least 3 to 4 times urine in a day, that is good, right? Okay. And उसका oral So it. intake of liquid कैसा है, because that's very important. Okay. Yeah. We keep टेलिंग डॉक्टर साहब ये सर्दी बुखार चल रहा है, उसको कुछ खा नहीं रहा है वो 4 दिन से, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, हम कुछ भी Okay. बनाते हैं उसकी फेवरेट चीज Yeah. खा रहा है. जी. Tell them very very clearly, see, first side effect of any infection, especially upper respiratory infection, is loss of appetite. भूख मर जाएगा, Okay. बच्चा खाएगा नहीं, उसका जी. फेवरेट पेस्ट्री भी नहीं खाएगा, केक जी. भी नहीं खाएगा. लेकिन आपका काम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर पेरेंट्स इज मेक श्योर आप उसको लिक्विड्स देते रहो. सॉलिड की चिंता मत करो. Okay. एक हफ्ता सॉलिड नहीं Okay. खाएगा, कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर 2 दिन वो लिक्विड Okay. नहीं पिएगा तो ही विल बिकम डिहाइड्रेटेड एंड आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, फिर आईवी ड्रिप्स लगाने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह, राइट? All right. सो मेन Okay. कंसर्न होता है कि फीवर बार बार आया क्यों है, खांसी सर्दी बार बार आ रही क्यों रही है, एंड ये खाने का पैटर्न, राइट?
एंड कुछ बच्चे हैं जिनको एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक खांसी होती है, विच कैन हैपन थ्रू आउट द ईयर, मतलब 6-8 मंथ चलता है उनका खांसी, बार बार स्नोरिंग, बार बार रात को Yeah. छींकना खांसना। ये लॉट ऑफ फैक्टर्स आर जी, देयर, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, पेरेंट्स को डस्ट एलर्जी हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स को अस्थमा हो सकता है, जी, ऐसे बच्चों को एलर्जिक राइनाइटिस रहता है। उससे बच्चों को थोड़ा ट्रीटमेंट माइट डिफर, दे मे नीड सम नेजल स्प्रे, they may okay, need some nebulization, they may need some additional investigation if required. Otherwise, majority of children go through a 5 to 7 days of fever, cold, cough pattern, which 90% of them come out of it very, very well. Hardly 10 yeah, 12% बच्चों में हम ब्लड टेस्ट करते हैं, कभी कभी आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, बट दैट नंबर इज वेरी वेरी जी, स्मॉल। सो पेरेंट्स के लिए एडवाइस मेरा यही है कि डो नॉट अननेसेसरली पैनिक, बिकॉज yeah. अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, गूगल पे पढ़ते हैं, जाके गूगल में बार बार देखते हाँ, हैं कि फीवर आ गया, that is खांसी something I हो am गया तो also फर्क। guilty of. मतलब मैंने भी किया है obviously, so मतलब I do agree, and that is always like there will be half information, or essentially वो information किसी चीज के साथ में comprehensively देखनी चाहिए थी, जिस which we are not aware of, and suddenly वो एक sentence पढ़ के you panic. Yeah, Google can give you a cumulative of lot of information which has been fed to it by multiple sources, by multiple people across the globe, right? कि किसी बच्चे को खांसी 2 हफ्ते का true. था, उसको Yeah, निमोनिया निकला, उसको लंग इन्फेक्शन, उसको uh, कुछ निकला, Google will just give you those from their data. Then your mind would yeah. pick up the most negative sentence from the Google, निमोनिया या टाइफाइड, That's human तो आपके tendency माइंड में somehow it is. Yeah, वो डर डर आपके माइंड में आ जाता है। सो आई ऑलवेज जी, सजेस्ट पेरेंट्स, यू कैन यूज गूगल प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल टर्म्स, इन टर्म्स मेडिकल प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग फॉर अ डॉक्टर, सर्चिंग फॉर अ लैब, सर्चिंग yeah, फॉर सम मेडिकल एक्सपर्ट, such things. Do yeah, not search for symptoms and diagnosis. वो आपको yeah. इट विल बी बहुत detrimental हो जाएगा। So don't do that. That's my Yeah, advice to parents. okay, Of course, take an opinion yeah, after 3 days, 4 days of fever नहीं जा रहा है, खांसी नहीं जा रहा है. Take one yeah. pediatric opinion, just to be on the safer side कि हाँ कुछ lung involvement नहीं है और सब कुछ ठीक है, right? Yeah. So that is a challenge. Of course, parents are parents, so emotions are there. Of course, and when we are dealing with children's, obviously, parents have a tendency to get emotional. So that is how it 100%. is. That is the nature of that is the nature of the relationship that you have with kids, obviously, Absolutely. and that अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता. Those will always remain, and uh, we've all been there. So दूसरे को क्या बोले, मतलब हमने खुद ने भी सबने वही किया है. I mean, you have like vast amount of knowledge and experience in this industry. So overall, if you could just give us some general tips for good parenting, and by good parenting I means a nice healthy development of the kid. So be it in terms of their diet, their activities, their mental health, all these things. So overall, like generic tips which can be like applied to all kids. देखिए, so this is question is, of course, the question is very simple. The answer is very very vast because every Yeah, child, depending on it the is. It is. Yeah, yeah, requires specific nourishment, different kind of approach, different kind of parenting, yeah, different kind of time you have to dedicate, different kind of environment, a lot of things, right? So a newborn baby first six yeah. months should be fed exclusive breastfeeding. माँ के दूध के अलावा Exclusively. कुछ जरूरत, पानी को भी, Okay. पानी भी आप नहीं देना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए, राइट? अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम इशू G. कि ब्रेस्ट मिल्क है, क्वांटिटी नहीं आ रही है, मदर इज Okay. नॉट एबल टू फीड वगैरह, Okay. then you take your Okay. suggestion from a doctor and additional जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स दे सकते हैं, जो भी आपको सब्स्टिट्यूट दे सकते G. हैं, अदरवाइज फर्स्ट 6 मंथ्स G. एक्सक्लूसिव। नाउ 6 मंथ्स के बाद देयर इज अ डिमांड जो बढ़ जाती है बच्चों की, राइट? सो देयर डिमांड G. इंक्रीजेस, सिर्फ मदर मिल्क सफिशिएंट नहीं होता है, so they need additional True. nourishment in terms of protein, in terms of carbohydrate, in terms of fats. So we suggest start with Yeah. purees, start with easily digestible food grains and single grain porridges, रागी का हो गया, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, वेजिटेबल्स को बॉईल करके मैश करके देंगे आप, तो बेसिकली उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से शुड गो ऑन इंक्रीजिंग, ब्रेस्ट मिल्क चलता रहेगा बट यू गो ऑन पैरेलली गिविंग। Okay. In fact, a lot of parents ask us कि डॉक्टर अभी 6 मंथ्स का हो गया है, हो गई है, कैसे शुरू Yeah. करना है, क्या शुरू करना है?
our first option always remains homemade, home cooked food, जैसे जैसे मैंने आपको बताया. Yeah. But there are about 20-30 Yeah. babies जो लेते नहीं माँ के दूध के अलावा कुछ वो नहीं लेते हैं. 6 महीने 8 महीने बेबी they are like fussy, they keep refusing meals. Then in this regard, we started a brand called as Hungry Koala. We started our own nutritional brand called as Hungry Yeah. Koala. Because today there is a huge gap. obese बच्चे obese होते जा रहे हैं, malnourished बच्चे malnourished होते जा रहे हैं. तो ये divide बहुत ज्यादा है. Exactly. Right? ये क्यों हो? Yeah, I also wanted to come to that topic कि मतलब yes, I wanted to come to that your brand as well कि why did you feel the need of it? Like जो existing brands हैं, what is the challenge with them? What is it that they are missing? It so happened 2 years ago. जी. Of course, I've been coming a lot of parents who keep asking me कि डॉक्टर साहब क्या देना है, क्या नहीं देना है, because we doctors do not recommend random left, right, and center XYZ product unless we know what is inside, unless we know what is the ingredients. Because True. it's unhealthy and it's harmful. Yeah. So one day I just happened to pick up one of such products from my center and brought home so that I can try on my kids. I knew that there are some ingredients which are not really good. So my wife checked the ingredients and she said it's got maltodextrin, it has got 35 grams of sugar, it has got acid stabilizers. ये सब क्या है? Then I said ये सब प्रोडक्ट को सेफ रखने में, प्रोडक्ट को टेस्टी बनाने में, प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ बढ़ाने में काम आते हैं. तो लेकिन ये बच्चे के ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए कैसा है? Then I said it is extremely harmful. There are enough studies done in multiple institutions, including Oxford and Harvard and all that. In Indian Institute also, they have done enough studies to prove that how harmful these ingredients can be. Because first 3 years बच्चों का 80% ब्रेन डेवलपमेंट होता है. सो इमेजिन जब आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, आप जो भी नेगेटिव फूड खाओगे वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा ब्रेन को. आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगे, आपका कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होगा, आपका हाइपर एक्टिव नेचर होगा. यू कैन इवन बिकम ऑटिस्टिक काइंड ऑफ फीचर्स आ सकते हैं बच्चों में. ओबेसिटी हो सकता है. Then she was like, sure. Then how come doctors are writing such products? Well, unfortunately, there are not good options available in the market. So either we write or we don't write, or we just recommend homemade foods. Then the so-called research began. We started aggressively, getting deeper into this industry, food industry for kids. We started picking up all these products on the shelf. हमने पढ़ा ingredients क्यों डाला है, क्या डाला है, ये कितना damage कर सकता है. Then we met a lot of food scientists. We went to a center called as CFTRI. Mysore में एक center है, Central Food Research Institute, one of the very renowned and prestigious new food institute है वो. वहाँ पे हम गए, काफी लोगों से मिले, nutritionists से मिले. Then we came out after 2 years of vigorous, aggressive research. We launched Hungry Koala, keeping in mind exact nutritional demands of a growing child, keeping in mind कि नेगेटिव जो हार्मफुल प्रिजर्वेटिव डालने से क्या होता है. तो वी मेड श्योर दैट we omitted all this bad stuff from that, and we launched clean, nourishing, wholesome food. Today we have got Hungry Koalas. इन्फेंट सीरियल्स हैं जो बच्चों को, जो मदर्स वर्किंग हैं, पेरेंट्स वर्किंग हैं, जिनको टाइम नहीं है बनाने के लिए, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको सपोर्ट नहीं है. इट इज द बेस्ट थिंग टुडे इन इंडिया. इन्फेंट सीरियल by name Serium. A lot of hundreds of mothers across the country are loving it. Doctors are appreciating it. Pediatricians are really in awe of the product, because no doctor has ventured into child food industry so openly and boldly so far. हमको नीड दिखा, हमको बिजनेस नहीं था हमारे माइंड में. हमारे माइंड में एक नेसेसिटी था, हमारे माइंड में एक नीड था कि अभी कोई XYZ कंपनी बना के बेच रही है. आप पलट के देखेंगे तो उसमें कोई पढ़ता नहीं है. पेरेंट कितने पेरेंट्स, आप कितने बार गए हो सुपरमार्केट में, आप कितने बार इंग्रेडिएंट्स. We not every. So this is a problem which is there, without doubt. आपने विराट कोहली देखने, आपने अमिताभ बच्चन, हाँ चलो यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, they are promoting it. But as a parent, we have our responsibility also, right? So that's the reason we started it. We have got today pancakes, we got peanut butters which are natural, made with super grains, no preservative, no junk, no trash. And that's what we always say. बच्चों को हमेशा wholesome nutrition दीजिए. Especially 1 to 3 years बच्चे, they're very active, they're hyper, they're running, they're playing, they're jumping, they burn a lot of calories. So make sure, and उनका appetite भी कम हो जाता है because they become very selective. उनको सिर्फ चॉकलेट से मतलब है, उनको सिर्फ चिप्स से मतलब है, उनको सिर्फ
से मतलब Exactly. है। Yeah. तो एग्जैक्टली, तो यू एज अ पेरेंट शुड गेट लिटिल बिट नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन। Yeah. हाँ भाई, 1.5 साल के बच्चे को Yeah. दे नीड अबाउट 20-30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे। तो मैं कैसे इसको दूं, Yeah. कौन से फूड्स बनाऊं, रागी में कितना प्रोटीन है, मिलेट्स में कितना है, ड्राई फ्रूट्स में कितना है, व्हाट कैन आई प्रिपेयर एंड आई मेक श्योर दैट माय सन और डॉटर गेट्स द एनफ नरिशमेंट एंड ऑफ द डे। हाँ, बीच में जंक खा ले तो Yeah. नो प्रॉब्लम, लेकिन कैलोरीज, उसका राइट Yeah. न्यूट्रिशन, उसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्रोमाइज मत करो। So make sure that you start your Yeah. never start your day with sugary breakfast. Never do Yeah. that. Invariably, Yeah. eventually वो उसको हार्म ही करेगा, बैड कैलोरीज एक्यूमुलेट होंगे। एंड स्कूल गोइंग बच्चों को अक्सर हम कहते हैं कि वो कोई भी आप इन्फेंट्स, कोई भी आप सीरियल का पैकेट लेके उसको चोको वोको बना के मत दो, उसका शुगर कंटेंट देखो, बिकॉज Mm. दैट विल टेक अवे हिज Exactly. कंसंट्रेशन एबिलिटी। फिर आगे पेरेंट्स ये मेरा Yeah. बच्चे का कंप्लेंट आ रहा है कि वो सुनता नहीं है, he doesn't sit in the classroom, he doesn't focus, doesn't, because his sugars are already high and he's feeling, difficult to focus and concentrate. Yeah. Rather start True. your school going child's day with maybe boiled eggs, maybe some natural whole Yeah. grain meal, maybe with fruits, or maybe with dry fruits, or regular breakfast जैसे Yeah. आप खाते हो, इडली डोसा, फुल्का, चपाती, या पराठे Yeah. आलू के, anything that way, wholesome, Exactly. nourishing, which benefit them, right? Not with sugary foods or sugary breakfast जो आपको बच्चे को सिर्फ शुगर रश करेगा, लेकिन उसको फायदा कुछ देगा नहीं। Yeah. ट्रू। रिसेंटली अभी दिस पैकेज फूड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया उसमें, एंड आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च नॉट ऑन दी लाइक किड्स फूड बट जनरिक ऑल दीज सो कॉल्ड हेल्दी फूड दैट वी ईट, पैकेज्ड फूड। एंड मतलब आई स्टार्टेड रीडिंग लेबल्स एंड bread, brown bread composition, maida, how much is atta, how much is maida, and all that. And I realized this whole packaged food industry is quite literally messed up. And but then there's lack of awareness. I mean, Scary. there's hardly anybody who ever reads that label. I have also just recently started reading labels. Till this date, I'm like 38. I never read labels, and I consider myself to be like मैं aware इंसान हूँ types, कि मैं जागरूक इंसान हूँ। अगर मैंने नहीं पढ़ा तो आई एम श्योर कि दुनिया ने नहीं पढ़ा है। सो एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर कि वो सिमिलर चैलेंज जो होगा वो किड्स की फूड इंडस्ट्री में भी डेफिनेटली रहा होगा। सो थैंक यू फॉर सॉल्विंग दैट, एंड this is something which the world definitely needs, because end of the day health से बढ़ के कुछ है नहीं, एंड किड्स हेल्थ से बढ़ के डेफिनेटली कुछ नहीं है, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट जनरेशन दैट वी आर सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग। अगर इट्स डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन, the whole of next Correct. generation. So definitely it's a noble cause worth pursuing, and my good wishes and thanks for taking up that cause. Thank you very much for that. उसके अलावा सर, जैसे कि आपने कहा था बच्चों को असेंशली ऑल दे वांट इज चिप्स एंड पिज्ज़ाज एंड बर्गर, और उनका असेंशली जो भी उनको खाना है वो पेरेंट्स खिलाना नहीं चाहते, बिकॉज वी एज पेरेंट्स नो कि इट इज नॉट गुड फॉर देम, बट समहाउ दैट इज द ओनली टेस्टी थिंग that is the only thing that they find tasty and they actually want to eat. अभी हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक अ बैलेंस, क्या करें मतलब, बिकॉज जो हम खिलाना चाहते हैं वो खाना नहीं चाहते, जो वो खाना चाहते हैं वो हम खिलाना नहीं चाहते। एंड ऑफ द डे फिर दे थ्रो टेंट्रम्स, और आपके पास एक बहुत ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। मतलब हाउ डू, so is there some sort of trick or some something you can guide us on? सी ट्रिक होता तो मैं आज वर्ल्ड का मिलियनेयर डॉक्टर होता, सबसे ज्यादा, सबसे Of course. सबसे Of course, yeah. अगर अगर There's no होता, magic wand, क्योंकि we ये understand that, हर, हाँ जी। नो ये हर पेरेंट का कंसर्न है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, व्हाटएवर वी कुक ही डजंट ईट एंड ही इज वेरी फसी, एंड जो भी हम बनाते हैं बेसिकली खाता नहीं। True. सो सी यू मस्ट अंडरस्टैंड True. कि हर बच्चे का appetite एक यूनिक रहता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो कंपैरिजन विद किड्स, जी। राइट? घर में दो बच्चे हैं, True. दो बच्चों के कंपैरिजन में नहीं, they have their own kind of metabolism. जी। Now, Yeah. feeding a toddler and school-going child is extremely challenging for every father, every Yeah. mother. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बच्चे खा लेते हैं। Every child has his or her own challenge, because for them nutrition is not a necessity. उनको पता नहीं कि food एक necessity है, True. especially Yeah. which Yeah. come well-to-do families, middle class and upper middle class families, उनके लिए Yeah. खाने की कमी नहीं है घर पे।
They always have fruits yeah, at home, they always have some junk at home, always yeah, have enough food at home. ऐसे घर के बच्चों को फूड एक लग्जरी है, उनको नेसेसिटी नहीं, उनको ये yeah, पता नहीं कि भाई जिंदा रहने के लिए खाना है और सेहत तो अच्छी रखने के लिए true, खाना है, उनको ये पता नहीं है। उनको ये yeah, पता है कि बस yeah, मजेदार है तो मैं खाऊंगा, अगर मेरे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा true, है, वो खाने से मुझ में एक्साइटमेंट yeah, मिल रहा है, मुझको मजे आ रहे हैं, मेरे आई बॉल्स बड़े हो रहे हैं, तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं yeah, खाऊंगा। सो वी नहीं एज खाऊंगा, true, पेरेंट्स कंट्रोल एंड यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस रिगार्ड, इन द सेंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं हमेशा कहता हूं, ईट एज अ फैमिली, टुगेदर हैव okay, फूड एज अ yeah, फैमिली। आपके डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं, आप नीचे बैठ रहे हो, आप कहीं भी बैठ रहे हो, साथ में बैठो, husband, wife. okay, I know, lot of challenges beside this will be there कि working है, at least one meal in a day. अगर आप इतने भी बिजी हो कि mm, यार मेरे को सुबह 6 बजे yeah, निकलना होता है, ये है वो है वगैरह वगैरह, one meal in a day minimum you must have together as a family. इससे yeah, क्या होगा, yeah, आपका बच्चा या बच्ची दे विल ऑब्जर्व यू कि आप क्या खा रहे हो, एंड दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप मील जी, फैमिली के साथ खा रहे हो, you must also eat foods which you want your child to eat. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको okay, खाने हैं, yeah, आपको रोटी सब्जी खानी जी, है, आपको प्रोटीन के हिसाब से अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बॉइल्ड एग्स एंड चिकन एंड फिश लेना है, yeah, आपको रेगुलर सैलेड्स लेने हैं जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, जी, आपको गुड अमाउंट ऑफ mm, वाटर लेना है, आपको ड्राई फ्रूट्स एज अ ब्रेक। सो ये सब डाइनिंग टेबल पे आपकी mm, हरकतें, आपका नेचर, आपके खाने का अंदाज, आपके खाने का चॉइस, योर चिल्ड्रन विल ऑब्जर्व, जी, and जी, them you are the hero or the shiro or whatever, right? Or if my yeah, father is, disciplined life, true, he is yeah, eating at mm, right time, healthy meal, आप खुद हमेशा वो स्पाइसी ग्रेवी या हमेशा आप कुछ जंक फूड खाते हो, या फिर आप सैलड नहीं लेते हो, आप खुद प्रोटीन ठीक से लेते mm, नहीं हो, एंड यू आर एडवाइजिंग योर चाइल्ड टू डू दैट, he or she is true, not a fool, they'll yeah, bounce back, true, they'll tell you कि पापा आप तो खाते नहीं हो, मैंने आपकी प्लेट में कभी नहीं देखा yeah, ये, मैंने कभी आप yeah, प्रोटीन स्प्राउट्स बोलते हो, आप स्प्राउट्स खाओ, आपके उसमें मैंने देखा नहीं कभी क्यूक्यूम्बर हो या कभी नहीं, सैलेड हो, आप बोलते, सो ये होगा। सो फर्स्ट एंड okay, फॉरमोस्ट हैव द डिसिप्लिन। नंबर टू, yeah, वॉच योर चाइल्ड होल डेज मील, कि बीच में yeah, खाने से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड that he or she had a piece of chocolate, piece of chips or a piece of pastry or one biscuit, इसमें क्या होगा, mm, appetite drop हो जाता है, भूख गिर okay, जाती है, yeah, because there yeah, is rush in the body, शुगर जाके ब्रेन को बोलता है, there's a part of the brain called as hypothalamus, hypothalamus controls your okay, appetite and your everything, hypothalamus को शुगर बोलता है कि mm, पेट भरा हुआ है, नहीं चाहिए, तो उनको हंगर वहीं से नहीं आता है। yeah, सो प्री मील true, स्नैकिंग बंद कीजिए, दैट इज वेरी 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 okay, एसेंशियल, राइट? okay, एंड okay, तीसरी चीज, yeah, whenever you prepare your food, whatever you prepare, एक चीज याद रखिए, बच्चों को mm, ये नहीं मैटर करता है कि उसमें कितने न्यूट्रिशन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, उनको ये मैटर करता है कि दिखने yeah, में कितना कलरफुल है, टेस्ट थोड़ा अच्छा okay, है कि नहीं। yeah, तो आप mm. उसी You have फूड to को make it थोड़ा a little more कलरफुल बना, presentable, yeah, yeah, प्रेजेंटेबल, कुछ ब्रोकोली के पीसेस डाल दो, कुछ mm, वो अपने वो अनार mm, के दाने डाल दो ऊपर, कुछ सजा दो उसको, mm, कुछ मेक वो स्माइली बना दो, व्हाट आई एम सेइंग, you have to be a little yeah, I creative understand, so yeah, that, oh true, wow, let me eat the eyes of the food, let yeah, me eat the eyes of this puppy, mm, आपने बना दिया फूड के yeah, साथ, so ये आपको करना है। yeah, दूसरा, of course you have to become little creative in terms of adding some taste to the food, कुछ healthy, आपने कुछ एप्पल yeah, सॉस डाल दिया, आपने कुछ जैगरी सिरप mm, डाल दिया, जस्ट एज गिविंग a little bit of thing. mm, I don't suggest that हर फूड को शुगरी बनाओ, but you have to yeah. strike it, and Somehow you also have the to dining like table, strike a balance, yeah, yeah, absolutely, and also on the dining table keep talking about benefits of the food you're eating. Okay beta, see, I'm having chana, okay, chana is a yeah, very rich source of, strength, chana builds your muscles, and see, I'm having boiled egg, yeah, it's excellent, this white part mm, is called as albumin, is a pure protein, and yeah, it will give your muscles strength, this is inside is fats yeah, also important for growing children, will build your brain. So ये आप बोलते रहोगे तो eventually child would know that in the background कि हाँ,
this is good, make me strong, I have to play well, I have to read well, I have to sing well, I have to dance well. ये होगा, ये आपको कंसिस्टेंटली करना है, आपको कॉन्स्टेंटली करना है विदाउट गिविंग अप. यू हैव टू हैव द डिसिप्लिन. Yeah. ये बच्चों को खिलाने का कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, कोई कोई क्रैश कोर्स नहीं है, सही बात है. इसमें कोई Yeah. वो नहीं बिल्कुल है. सही बात है. Yeah. इट्स ए Yeah. इट्स ए डेली चैलेंज, इट्स ए डेली. इसीलिए मैं कहता हूं पेरेंट्स को, जब आप पेरेंट बन जाते हैं, यू हैव टू बरी यूर बैचलरहुड एंड योर पास्ट. आपका जो भी लाइफस्टाइल अब तक था, आपका जो भी कैजुअल नेचर अब तक था, जो भी था, वी हैव टू चेंज. Yeah. बिकॉज हम ऐसे रहेंगे, लेकिन हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि बेटा तुम ऐसे मत रहो, इट इज जोक, इट्स ए जोक, राइट? True. इफ यू वेक अप अर्ली, यू Yeah. wake up early. If you go to bed early, he will go to bed early. अगर आप मोबाइल घूरना बंद करोगे पूरा दिन, तो वो भी घूरना बंद करेगा. अगर आप कोई किताब उठा के पढ़ते हो दिन में आधा घंटा, he will eventually do that. So everything at home, स्कूल हम भेज देते हैं बच्चों को, स्कूल इज ओनली 20%, 80% आपका फर्स्ट 5 years to 7 years बच्चों का अपब्रिंगिंग और स्कूलिंग घर का होता है. What kind of personality your son or daughter will have when he grow up depends on what kind of environment you have provided first 5 to 7 years of life. क्योंकि स्कूल का अलग रहेगा, True. घर का माहौल 24 Yeah. hours आपको देख रहा है, देख रही है. आप कैसे करते हो, आप वर्कआउट करते हो कि नहीं, आप हेल्दी फूड लेते हो कि नहीं, आप अपनी वाइफ से, आप अपने हस्बैंड से कैसे बात कर रहे हो, आप किसी भी आपके कलीग से आप कैसे बर्ताव कर रहे हो, आपसे नीचे वाले लोगों से आप क्या लैंग्वेज में बात कर रहे हो. You cannot fool your children because you all the time. So we should generally become good people. We should by default Yeah. should become good people. हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ, हमारे गुस्से के टाइम पे हमारी कौन सी लैंग्वेज निकलती है, स्पेशली गाड़ी चला रहे हो, किसी ट्रैफिक सिग्नल में हो, Yeah. सिग्नल रेड है, कोई जंप किया या फिर आपका ग्रीन है, किसी ने आपको काटा, आप गुस्से में क्या बकते Yeah. हो, Exactly. Yeah. आप क्या करते हो, Yeah. आपके गाड़ी में देखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं, राइट? सो इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ rewiring in our brain and our behavior, in our own attitude. It may take few weeks, Yeah. it may take few months, it's okay, but we should start Yeah. putting that Yeah. effort. Eventually हमारे बच्चे कल जाके वो बने, एक दिन में वैसे नहीं बदल जाएंगे. हाँ, माहौल, पेरेंट का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है. Absolutely agree. मतलब you talked about traffic signal. मेरा बेटा है, he's like 6 and वो मुझे इतनी बार टोक चुका है whenever I jump a traffic signal. He's like पापा रेड थी, आपको जंप नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों रेड किया? And then I do एक दो बार I do realize कि हाँ मतलब अभी I can't fool him. I mean I can't tell him some bullshit story. मतलब essentially if I अगर मैं कोशिश चाहता हूँ कि वो एक सर्टेन वे में बिहेव करे, देन आई हैव टू बिहेव दैट वे. एंड एज यू वेरी राइटली सेड, हमारे वी शुड बिकम लाइक बेटर ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज अभी हम पे एक Yeah. एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ऑफ नर्चरिंग अ न्यू लाइफ, और दैट न्यू लाइफ एक्चुअली वो आपको एक रोल मॉडल की तरफ देख रही है. तो जैसा आप बिहेव करोगे, ही विल ट्राई टू इमुलेट यू, और एज अ पेरेंट दैट्स व्हाट वी वांट. मतलब हम भी ये चाहेंगे कि वो हमें एक रोल मॉडल की तरह देखे और हमें इमुलेट करे. तो बट देन वो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम एक अच्छे रोल मॉडल बने एटलीस्ट. देन वी कांट कंप्लेन बाद में कि ये तो बुरा बन गया. एंड ऑफ द डे बना तो आप ही को इमुलेट करके है ना. सो दैट्स Absolutely, एब्सोल्युटली they ट्रू. या do what you tell them to do, they do what you do, simple Yeah. as it is. ट्रू, एग्जैक्टली. And you can't fool children without it. Matlab, that is something I agree with. I mean, you can at times maybe fool an adult, but you can't fool a children. Matlab, they are much more smarter in that sense, because Yeah. वो जो एक्चुअल में देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली दे ट्रस्ट दैट एंड नथिंग एल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू से एंड व्हाट यू प्रिटेंड टू बी. उनको जो एग्जैक्टली सामने दिख रहा है, दे Your, जस्ट ट्रस्ट दैट. your actions are louder than your words, right? आप कर कुछ रहे हो लेकिन आप Yeah. एडवाइस कुछ और दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो मजाक हो जाएगा. मजाक हो जाएगा. ट्रू. एंड अनदर पॉइंट दैट आई फाउंड वेरी वैलिड वाज, और रेदर गुड वाज, व्हेन यू सेड कि टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फूड. दिस वाज समथिंग जो मेरे कभी दिमाग में नहीं आया, बट आई डू बिलीव कि मैंने वट एवर, मैं जैसे मतलब आई एम फादर ऑफ अ 6-year-old सन, सो ऑब्वियसली जो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, जिस भी बारे में मैंने उससे बात की है, माई किड हैज डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन दैट. मतलब वट एवर,
फ्रॉम स्पोर्ट्स टू जो भी मेरे इंटरेस्ट हैं, वट एवर वी टॉक अबाउट, समहाउ आई सी कि वो उसी डायरेक्शन में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. सो येस, अगर मतलब इफ वी टॉक अबाउट फूड, हेल्दी फूड, इट्स बेनिफिट्स एंड ऑल दैट, आई एम श्योर कि टाइम के साथ डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा. एंड विच इज समथिंग जो अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आया था, बट दिस इज माई टेक अवे फ्रॉम दिस, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, एंड the audience should as well. That's a very useful point. Thank you for bringing that up. Also, sir, children's के केस में, I mean, my son in particular, वो टेंट्रम्स बहुत थ्रो करते हैं. मतलब अभी, एज आई सेड, कि माय क्वेश्चन वुड बी कि डू वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर इट, एंड आई एम श्योर कि ऐसा कोई मैजिक वैंड तो आपके पास भी नहीं होगा उसका, बट इज देयर अ वे दैट वी कैन सॉर्ट ऑफ हैंडल दैट? मतलब इज देयर एनी साइकोलॉजी बिहाइंड इट कि बच्चा जो टेंट्रम थ्रो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? सो मतलब हाउ डू वी डील विद इट? इज देयर एनी लाइक एनी नहीं, देखिए साइंस और स्टडी और देखिए टेक्निक? टैंट्रम्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड, स्पेशली 1 year प्लस से आपको दिखना शुरू हो जाएगा. बिकॉज सी जी, द चाइल्ड फील्स द मोस्ट क्लोजेस्ट टू पेरेंट्स, राइट? उसका हक सबसे ऑफ ज्यादा वो कोर्स, पेरेंट्स पे है. तो जी, ही फील्स ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू एनी लेवल व्हेन इट कम्स टू पेरेंट. सो या, टेंट्रम थ्रो करना नॉर्मल चीज है, कोई अब नॉर्मल चीज नहीं है. जिद करेंगे, अपनी अपनी अटेंशन सीखने के लिए करेंगे, हाँ मुझे ये चीज नहीं दे रहे तो मुझे ये चीज चाहिए, तो आई विल. सो या, टेंट्रम्स ठीक है, लेकिन एज ए पेरेंट आप टेंट्रम को या, कैसे हैंडल कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमेशा मैं यही कहता ट्रू, हूं, वी मस्ट एज पेरेंट्स लर्न टू से नो ऑफन. हम अक्सर ओके, अपने वो प्यार मोहब्बत में, बच्चों की पैम्परिंग में हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है. वी डोंट से नो ऑफन, ट्रू, बिकॉज टुडे व्हेन यू से नो टू योर सन when he's asking for something unhealthy, when asking repeatedly mobile phone, या, when asking the chocolate repeatedly or whatever, so tomorrow you will regret, या, and he or she also will regret, right? So tantrum एक या, नॉर्मल चीज है, लेकिन tantrum की वजह से you should not compromise on your upbringing. अगर बच्चा गलत या, चीज के लिए जिद कर रहा है, गलत फूड के लिए, जी, गलत जगह खेलने के लिए, कोई अनसेफ जगह जाने के या, लिए, गाड़ी की विंडो ओपन करके बाहर हाथ डालना चाहता है, या फिर गाड़ी के आगे के सीट में बैठने के लिए जिद कर रहा, यू हैव टू से नो एंड ड्रॉ द लाइन, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ या, अपब्रिंगिंग. क्योंकि सिर्फ चाहत दिखाना, मोहब्बत दिखाना, लव दिखाना इज नॉट अपब्रिंगिंग. आप नहीं चाहेंगे कि आपके ऑफ कोर्स, पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, या आपके कोई दूर के, या फिर कोई स्ट्रेंजर आपके बच्चे को ज्ञान दे, या बच्चे आपको सुधारे, या आपके बच्चे को या, करेक्ट करे पब्लिक प्लेसेस में. यू डोंट लाइक दैट, देन वी हैव टू डू दैट एट होम. ये अपब्रिंगिंग का बहुत अहम हिस्सा या, है. हमेशा मैं कहता हूँ पेरेंट्स को, दौड़ जी, वो मिट्टी खाता है, वो दीवार का पेंट खाता है, सुनता नहीं है, मोबाइल फोन नहीं ले, छीन के रोता है. आई टेल देम कि बॉस, जब आप 5 साल का 6 साल का हो जाएगा, उसको लर्निंग प्रॉब्लम होगा, जी, उसको आंखों को प्रॉब्लम होगा, या, उसका एनीमिया हो जाएगा, उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा, तब आप क्या क्या आप अपने आप को कोसोगे, आप कि उसको कोसोगे? किसको कोसोगे आप? वो तो बच्चा था, उसने जिद किया, बट यू एज ए फादर और या, मदर शुड ड्रॉ द लाइन, राइट? टेंट्रम्स एक नॉर्मल चीज है, लेकिन आपको फर्म एंड पोलाइट रहना है. यू हैव टू से नो, क्योंकि टेंट्रम यूजुअली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में इट विल फेड ऑफ. अगर आप ट्रू, या, एंड्योरेंस आप में है, टॉलरेंस आप में है, उसको रोना धोना, उसका जो नागिन डांस वो कर रहा है रो रो के फ्लोर पे, वो अगर आप झेल जी, लेंगे 15 मिनट, तो वो टैंट्रम चला जाएगा. जी, लेकिन बहुत से चला पेरेंट्स दे जाएगा, कांट सी द चाइल्ड क्राइंग एंड ही हैव अ मीटिंग, यार वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, ये रो रहा है, उसको दे दो यार मोबाइल फोन, उसको चॉकलेट दे दो, उसको आइसक्रीम दे दो, यार आई डोंट केयर, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, मेरे को बैठना है. सो ट्रू, आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स का स्ट्रेस, आई अंडरस्टैंड ये सब जरूरी है, ये सब होता है, या, लेकिन वो एक गलती विल उसको और बढ़ावा देगी. अगले दिन उसका टैंट्रम डबल होगा, या, अगले हफ्ते उसका टैंट्रम ट्रिपल होगा. या, तो आप अगर हल्का सा एफर्ट डालेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमको अपने आप को बदलना है. वो मेंटल चेंजेस पहले आने हैं हमको. जी, हमारा पेशेंस लेवल, हमारा जी, परसेप्शन, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम कितनी आसानी से हम या, चिढ़ जाते हैं, कितनी आसानी से हम गुस्सा हो जाते हैं, ये हमको बदलना है. क्योंकि ये नहीं बदलेंगे तो आपके अपब्रिंगिंग में बहुत तकलीफ आपको होगी और बच्चे को भी होगी. लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं जहाँ पे अनयूजुअल टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, हाइपर एक्टिव नेचर है, ओके, उन बच्चों को इवैल्यूएशन करना पड़ेगा.
कि कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल इशू तो नहीं है, कुछ बिहेवियरल इशू तो नहीं है, कुछ ऑटिज्म जैसा बिहेवियर तो नहीं है, वगैरह वगैरह. अदरवाइज 90% ऑफ द किड्स हु थ्रो tantrums, you just have to manage it firmly, and if it is wrong, Yeah. you as a father or mother Yeah. must point out and say it is wrong and draw the line. आई डू. हाँ, एक मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद बच्चों मतलब हाउ डज इट एंड पे डिपेंड करेगा कि बच्चा नेक्स्ट टाइम टेंट्रम करता है या नहीं करता है या कितना करता है. अगर उसके फेवर में एंड होगा तो समहाउ ही रियलाइजेस कि ऐसा करने से शायद मुझे मेरी चीजें मिल जाती हैं, तो he'll keep pushing it further and further and further. As you said rightly कि if we say no 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 and do it multiple number of times, he would realize कि यार eventually वही होना है जो पापा ने करना है, and probably he will not throw those नहीं many नहीं, tantrums एग्जैक्टली. next time. आपको Yeah. आपको सेंसिबली आपको समझाना है. ऐसा नहीं कि हर नो 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 जी. करेंगे. ऑब्वियसली वो नो 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 विल बिकम, he'll take it for granted. यार हर बार नो Yeah. बोलते हैं, मेरे को कुछ है नहीं. नहीं, यू हैव टू रीजन इट आउट. 15-20 मिनट रोएगा, उसको रोने दो. जी. उसके बाद when जी. he calms down, you have to sit with him or her. हाँ. देखो बेटा, आपने ऑलरेडी 1 hour मोबाइल देखा था, एंड मोबाइल हैज गॉट रेडिएशंस. जी. इट बेसिकली डैमेज योर ब्रेन एंड सेल्स, योर आईज. तो बियॉन्ड दैट व्हेन यू गो ऑन वाचिंग इट, आपको और स्ट्रेस देगा, आपको और प्रॉब्लम देगा. सो दिस इज द रीजन आई डिडंट गिव. देखो बेटा, आपने ऑलरेडी 2 चॉकलेट खा लिए थे आज, तीसरे चॉकलेट की आप जिद कर रहे थे. जी. दैट्स व्हाई मैंने नहीं दिया, क्योंकि ये हार्म करेगा, आपको शुगर बढ़ाएगा, आपको पेट खराब करेगा. सो इवेंचुअली ये बातें उसको समझ में आएंगी. देन ही अंडरस्टैंड कि हाँ, Yeah. मेरे भले के लिए ये लोग नो कर रहे हैं. विदाउट रीजनिंग आप नो करोगे, आप रीजन नहीं दोगे. अब फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ा, आपने चलन दे दिया, उन्होंने बोला चलन, तो आप पूछ रहे हैं कि भाई चलन किस बात का देना है, वो आपको बता नहीं रहा चलन दे रहा है, चुपचाप चलन दे दे. तो आप क्या बोलोगे? अरे यार भाई ठीक है, मैं चलन दे दूंगा, मेरे को रीजन Exactly. बताओ. Yeah. So in the same way, when you say no or when you avoid it, when you restrict him or her or certain things, you must explain to them later when they are little calm. तो जिद कर रहे होगा तब नहीं समझेगा. True. आधे घंटे के बाद आप उसको बताओ, बात Obviously. करो, Yeah. हाथ पकड़ के वॉक पे लेके जाओ, जी. एक बॉन्डिंग बनाओ, बोलो. क्योंकि ये जो बात करने से बहुत पेरेंट्स से गलती करते हैं कि कर देते हैं गुस्से में, बोल दिया तो बोल दिया, मत करो, इट्स ओवर, अभी अभी बहुत हो गया तुम्हारा. हाँ. Exactly. ट्रॉमा रह जाता है माइंड में. उनको रीजन पता नहीं कि भाई क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है. ये थोड़ा वी नीड टू फाइन ट्यून आवरसेल्फ ऑन दैट. एक और चैलेंज रिसेंटली जो मेरे सामने आया, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ बट मे बी चाइल्ड साइकोलॉजी और मेंटेलिटी. आई डोंट नो इफ यू कैन गिव मी योर इनपुट. एसेंशियली जैसे अभी मेरा बेटा है, ही गोज टू स्कूल. अभी रिसेंटली आई फाउंड कि आपस में दोज किड्स, दो आर ऑल इन लाइक एलकेजी यूकेजी काइंड ऑफ किड्स, दे टॉक अबाउट लाइक कि इसकी बॉटल नई है, तेरी बॉटल पे यू नो हिज बॉटल इज बेटर देन योर बॉटल, माय बैग इज बेटर देन योर बैग, और इसका पुराना है, इसका फटा हुआ है, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स which I don't think is the right kind of a discussion for kids to have, मतलब of that age. अभी वो 6 साल के बच्चे अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब somehow consumerism जो है ना, वो capitalism वो वहां पे घुस गया है अभी. मतलब how do we deal with it? मतलब I was shocked. अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, and I was like अभी इस पे तो मतलब this is a higher level discussion. अभी इसको मैं capitalism और value of money वो सब कैसे समझाऊं अभी मैं 6 साल के बच्चे को. See, this is the kind of exposure we our children are getting into, right? आप सोशल मीडिया हो Yeah. या टेलीविजन, हर जगह से हो, सोसाइटी हो, कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक बातें होती हैं, सुनते हैं. उनको एक 5-6 साल के बच्चे दे नो वेरी वेल कि हाँ एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. अगर मैं ये सो एंड XYZ मैं ब्रांड यूज करूंगा या फिर ऐसे कपड़े पहनूंगा तो आई एम अ गुड गाय और आई एम सोशली एक्सेप्टेड वेल. सो ये एक अर्बन लेवल में बहुत बहुत कॉमन इशू है. कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है. जैसे मैंने बताया, ये सब कई चीजों से इम्पैक्ट होता है. घर पे आप एज ए पेरेंट्स क्या लैंग्वेज बात कर रहे हैं, आप कितना इम्पोर्टेंस लाइफ को दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी को दे रहे हैं, बेसिक चीजों को दे रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस आप ब्रांड को, लग्जरी को, एक स्टेटस को दे रहे हैं. ये ओके, गलतियां हम सब करते हैं. वी स्पीक अबाउट इट और विदाउट अ नॉलेज वी स्पीक ऑन द फोन एंड बच्चे सुनते हैं. सो ये आ जाता है. बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. एक थॉट बच्चे में आना गलत My नहीं challenge है. is कि कोई भी गलती, so my कोई भी challenge is गंदी कि हो, like I am not तो really that kind of a आने guy, दो. so we don't, हम उस तरीके से नहीं करते हैं. बट अभी वो बाहर जाएगा तो he will be exposed to n number of people. अभी उसका exposure तो हम curtail नहीं कर सकते, No, करना भी नहीं चाहिए. मतलब the idea is to give him maximum exposure.
पर उसको कैसे बैलेंस करें? No, that's what I'm telling you. ये सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं है. Anywhere from जी anything they can come across. उनके फ्रेंड्स बोल सकता है उसको कि यार देखो मेरी बैग ये है, ब्रांड की एग्जैक्टली है, तेरी बैग तो ऐसी है, गंदी है. उसको बेचारे को माइंड में आया कि अरे हाँ यार मेरे पास तो ऐसी बैग है, ये क्या कर दिया पापा ने, ये मेरे पूरे शू इतने पुराने गंदे दिख रहे हैं उसके, तो ये कहीं से भी आ सकता है. So that is where our role, we have to antivirus हमको बार बार डालना है, हमको डिटॉक्सिफाई उसको बार बार करना है. वो बाहर से आएगा, स्कूल से आएगा, खेल के आएगा, he will have something to tell you. जी We have to create an environment where they share, they open up, then you should sit and talk. हाँ बेटा क्या है, बेटा क्या बताया, हाँ नहीं उसके पास इतनी अच्छी सी बैग है, क्या है, हाँ क्या होता है अच्छी सी बैग से, बेटा क्या होता है, नहीं नहीं वो मैं. सो वी नीड टू गेट इनटू द वैल्यू सिस्टम ना, कि हाँ भाई सही वैल्यू क्या है. बेटा ये चीजें मटेरियलिस्टिक होती हैं, राइट. नाउ सी व्हाट द बैग शुड सर्व अ पर्पस. So this purpose is being served. ऑफ कोर्स अब उसमें XYZ 1000 बैग्स हैं, लिमिट कुछ नहीं है. कल के दिन मैं आपको 10,000 का बैग दे दूंगा, आप एक और लड़के कुछ से नहीं बोलोगे उसके पास एग्जैक्टली 1 लाख का बैग, एग्जैक्टली 1 लाख का बैग है, तो आप बोलोगे पापा उसके पास तो और बढ़िया सा बैग है, उसमें ये डिजाइन है वो डिजाइन. तो बेटा इट्स नेवर एंडिंग थिंग. What you must value is, the first, value the person, value the humans by nature, value everybody for what they are, value for what they are carrying, value for what the way they are living, right. हमारे घर पे for example domestic help आती है, she is earning money, she is putting her effort, she is taking care of our home and she is generating revenue. Now she can't afford what you have, या right. So ये ऑफ स्टोरी कोर्स बेटा खत्म नहीं होती या है. There is, everybody has their own kind of lifestyle, everybody is progressive, everybody is struggling ट्रू to go for. So इसका मतलब ये नहीं कि या जिसके पास है उसी की कदर है, ये नहीं. So this we have to, as a parent, as a father, as a mother, with examples of ourselves in comparison with anybody, you should say that never compare with yourself, always compare yourself with yourself. हाँ मैं पहले से, कल से मैं या अच्छा इंसान बनाऊं कि नहीं, कल से मेरे पास आज ज्यादा नॉलेज है कि नहीं, कल से मैं आज थोड़ा हेल्थी हूं कि नहीं, मैंने कुछ नया हैबिट सीखा है, नया स्किल सीखा है. ये चीजों पे ज्यादा फोकस हमको डालना है. एंड ऑफ कोर्स ये कुछ नया प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एवरी अदर वीक ही मे कम विद समथिंग न्यू, समथिंग व्हिच यू नेवर हर्ड ऑफ, या समथिंग व्हिच यू नेवर डिस्कस्ड इन योर लाइफ ट्रू फ्रेंड. या So या we have to deal it very. We can't even brush aside the question कि नहीं 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 ये सब बातें मत करो, अभी बड़े हो जाओगे समझ में आएगा, वो भी गलत है. You have to sort आई out the बिलीव दैट matter इज then तो and there. हाँ ऑफ कोर्स यू कैनॉट ब्रश इट साइड, वो तो और ज़्यादा डिसकंटेंट अंदर फर्मेंट करने वाली Correct. बात है, और ज़्यादा वो डिसकंटेंट अंदर भर जाएगा उसके. सो ऑफ कोर्स यू टू डिस्कस इट आउट एंड ऑफ कोर्स अंडरस्टूड. सो दिस इज चैलेंज. मतलब अभी मेरे को रिसेंटली लगा, अभी मैं हाउ डू आई लाइक, ऑफ कोर्स यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम, बट अभी ही इज अ 6 year old किड, उसको नहीं समझ में आता. एट टाइम्स इट फ्रस्ट्रेट्स यू ऑल्सो, अभी कितना समझाऊं मैं इसको. बट देन एज यू सेड, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ लाइक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. अब आपने इफ यू चोज टू बी पेरेंट, देन ऑफ कोर्स ये तो पूरा ना, इट्स अ लॉन्ग 25 year प्रोजेक्ट. देन यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट कंटिन्यूसली, करते रहना पड़ेगा डेली, डे इन डे आउट. एंड एज यू राइटली सेड, भी हो सकता है आज मैं उसको समझाऊंगा, आज उसको बैक का समझा दूंगा, कल परसों वो कुछ और नई चीज लेके आ जाएगा. देन यू हैव टू डू इट अगेन है ना? end of the day. So that is how it is, sir. Absolutely discuss. Yeah. You have to learn. You have to improvise yourself. Take some help from somebody whom you need. Then basically take care of your children. Thank you very much for uh, giving your time. We had a pretty meaningful and detailed discussion on my questions. आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much, Shamsher, for having me on this lovely podcast. And Yeah. it's always been my pleasure to share something valuable, to add value in anybody's life, especially when it comes to children upbringing, because upbringing process itself is vast and it's like a battlefield. And I'm here to do my best as much as I can do. And thank you so much once again for having me, and all the very best.